मानुषी संवाद में आपका स्वागत है। Welcome to the 19 February 2023 edition of मानुषी संवाद। Well friends, हमारे व्यूअर्स में भी और बाकी देश में भी इस बात पर बहुत नाखुशी है, मोदी सरकार से इस बात से बहुत नाखुश है कि शिक्षा का जो डिटॉक्सिफिकेशन होना था वो 9 साल में नहीं हुआ और उसी ढर्रे पर हमारी शिक्षा चल रही है, कोई बदलाव नहीं आया। Can you switch off the phone please? Where's this noise coming from? आज या अच्छा, यहाँ जब मोदी सरकार के साथ शिक्षा संबंधी रिफॉर्म्स की बात होती है तो वहाँ तो भारतीय ज्ञान परंपराओं को पुनर्जीवित करने की उम्मीद नहीं इतनी होती। वहाँ केवल एक छोटी सी उम्मीद थी या एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि जो कौमी इस्लामी फरेब और डिवियस नैरेटिव्स, फेक नैरेटिव्स हमारे कोर्स क्यूरिकुलम में जो जहर भरी गई है, उनको कैसे उस एंटी इंडिया, एंटी हिंदू नैरेटिव को कैसे हटाया जाए और कम से कम सही फैक्ट्स हमारे इतिहास के बारे में, हमारे समाजशास्त्र के बारे में और इस देश की पॉलिटिक्स के बारे में कम से कम वो तो सही बातें बताई जाएं, इस देश का साहित्य पढ़ाया जाए, ना कि पूरी तरह जो मैकॉले पुत्र बनाने की एक पद्धति अंग्रेज छोड़ गए बिल्कुल उसी तर्ज पे चले और यहाँ की भाषाओं को, हमारे देश की भाषाओं को कम से कम उपयुक्त स्थान मिले। छोटी छोटी ये उम्मीदें थी और वोकिज्म को दरकिनार करने की बात थी। वो तो उनका खुद का वायदा था कि वो ये करेंगे, परंतु वो उतना करना भी सरकार के लिए अब तक संभव नहीं हो पाया। वायदे हैं कि होगा, पर ऐसा कोई अभी तक दिखता नहीं ग्राउंड पे कोई बहुत बड़ा बदलाव। खैर वो भी छोड़िए, अब हम जो आज बात करने जा रहे हैं जिसके लिए राहुल गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। वेलकम राहुल जी, थैंक यू फॉर ऑफरिंग टू टॉक ऑन दिस थीम। तो मैं जैसे अपने दर्शकों को बता रही थी कि यहाँ हम केवल कोर्स क्यूरिकुलम को बदलने की, उसमें से कौमी इस्लामी जो नैरेटिव्स हैं, फेक नैरेटिव्स हैं, झूठ और फरेब की जो सारी गाथा रची गई है, उसको हटाने की बात नहीं। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपराओं को पुनर्जीवित करने की, जो कि कई सैकड़ों सालों से उनको दबाने का, नष्ट करने का काम किया गया। और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं हमारे दर्शकों के लिए कि भारतीय ज्ञान परंपराओं में केवल संस्कृत की स्कॉलरशिप या वेदों उपनिषदों का ज्ञान नहीं, परंतु जो और नॉलेज ट्रेडिशंस हैं जिसमें साइंस भी, भारतीय जो साइंटिफिक ट्रेडिशन है, इंजीनियरिंग ट्रेडिशन है, जैसे स्थापत्य शास्त्र जिसको आर्किटेक्चर का ज्ञान जो हमारे देश में इतना गजब का था कि आपको गांव-गांव में और हर कस्बे में आपको इतने आर्किटेक्चरल वंडर्स आज भी खंडरों के रूप में भले हों या पुरातन मंदिरों के रूप में हों, वो ही बचे हैं। तो वो भी सारी ज्ञान परंपरा लुप्त हो गई। हाल ये है कि वो जो हमारे पुरातन बचे हैं, जितने भी अवशेष आर्कियोलॉजिकल, हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को तो उनको रिपेयर करना भी नहीं आता। अगर वहाँ पे कुछ रिपेयर करने की ज़रूरत हो, सीमेंट पोत देंगे, उल जलूल काम कर देंगे। इसी किस्म से मेटल वर्कर्स, हमारे वीवर्स की जो ज्ञान परंपराएं थी, कितनी सारी वाटर हार्वेस्टिंग की, जो बड़े बड़े इतने गजब के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनते थे जिनमें कभी पानी सूखता नहीं, भले ही कितना भी अकाल आ जाए, कितनी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। और मैं ये आपसे सवाल इसी से करूंगी शुरू कि जितने भी थोड़े बहुत मैंने राहुल जी इनोवेटिव गुरुकुल चलाने वाले लोगों से बात की है, वो सब ये मानते हैं कि सरकार के सर्टिफिकेशन से दूर रहो,
उनका जो क्यूरिकुलम है वन साइज फिट्स ऑल यूनिफॉर्मिटी वाला बाबू बैठ के बनाते हैं, वो दूर रखो। और जो पद्धति थी गुरुकुलों की कि हर गुरुकुल अपने गुरु के अनुसार और स्टूडेंट्स की जरूरतों के अनुसार उसका क्यूरिकुलम बनता था। आपका क्या मानना है कि ये जो ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने की हम बात करते हैं, किसका जिम्मा होना चाहिए? हम क्या सरकार के मोहताज होकर बैठे रहे? उनका रोल बनता है कि ये काम समाज को ही करना पड़ेगा? And thank you very much, Madhuji, and thank you for that very well-rounded introduction. I'm very glad that you mentioned water plus all the other crafts, the handicrafts, the hastakala that remain prevalent in our country, even though circumstances make their prevalence difficult. So the question of whether Sarkar or Samaj, I think the very short answer is that this really is the responsibility of Samaj. If Sarkar has any role whatsoever, then the role of Sarkar has to be to stay away. And this I'm saying based on much of my recent experience working primarily with UNESCO Asia on the subject of traditional knowledge. And I'll just briefly describe what this required over the last 13 to 14 years, where I worked as a domain expert for a convention of UNESCO, a cultural convention called the Convention for Intangible Cultural Heritage, which is somewhat, I consider, is somewhat similar to what we understand as traditional knowledge. And this required repeated visits to other countries to train their officials, their administrators, but also their culture bearers, their knowledge bearers, in methods to encourage the craft or the art form and to find ways to ensure that it did not die out because of lack of transmission or because of lack of market. So often it required an understanding of what we call policy. And policy is a very muddled subject. And most of the muddling comes from the government's view of what it believes policy should be and how it should be interpreted and enforced. And in one place after another, there was not a single place where I did not say that, please, if you must have a policy, then make your policy such that government has the minimal role. Minimal role, if at all there has to be a role, then provide some funds, but don't attach conditions to those funds. And that ये is, तो I हो ही think, नहीं सकता सरकार के चलते, किसी भी सरकार के चलते। वो पैसा दे दें और अड़ंगी ना लगाएं। अब बिना पैसा दिए भी इतनी अड़ंगी लगाते हैं जी। ये सोचना कि सरकार पैसा दे देगी, ये संभव ही नहीं है। वो पैसा नोचते हैं सरकारी तंत्र, देना तो वो पॉलिटिकल वोट बैंक्स को देते हैं, जहां उनको वोटों की कारोबार करनी पड़ती है। आई डोंट थिंक दैट्स अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। if no, it is realistic if government wants to have some, as they call it, a stake in it. If they don't want a stake in it, then we don't need their money. And this is the reason why, in fact, as you said earlier, is it Samaj or Sarkar? If Samaj can organize the money, Samaj certainly has the wherewithal, the people with experience, the people with knowledge. And if we have a Samaj which can do both in some measure of competence, then we don't need government at all. We don't need Sarkar at all. But what we do need
is for Sarkar to be told in no uncertain terms that it has to stay out. There is, the implication that there must be a Sarkari hand in it is, I think, a false implication. But we'll आप get into हिंदी that a में little बात bit कर later. सकते हैं थोड़ी? आपसे थोड़ी थोड़ी बहुत हिंदी भी मिक्स कर लीजिए तो हमारे दर्शकों को ज़्यादा अच्छा लगता है। हालाँकि समझते हैं सब, ऐसा नहीं, पर बेचैन हो जाते हैं जब हिंदी बिल्कुल भी ना हो। अच्छा, कोशिश करता हूँ, बट माय हिंदी इज एक्सट्रीमली पुअर, बट प्रयत्न करता हूँ हिंदी बोलने की. हाँ, थोड़ी बहुत जितनी भी आती है। हाँ. ये देखिए ना, हम सब उसी शिक्षा पद्धति के प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ वाक़ई हमारे लिए अपनी मातृभाषा में बात करना संभव नहीं रहा। ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। आप बता सकते हैं राहुल जी, आपने तो दुनिया देखी है। मैंने और कोई देश नहीं देखा, अफ्रीकन देशों को छोड़ के हो सकता है क्योंकि वहाँ रिटन स्क्रिप्ट नहीं था, कोई ऐसा इतना इतिहास नहीं है लिटरेचर का, रिटन नॉलेज ट्रेडिशंस का। कोई ऐसा देश नहीं देखा जहाँ लोगों को अपनी मातृभाषा में पूरी की पूरी बात दिल खोल के हर सब्जेक्ट में अ, करने का अभ्यास ना हो या उसमें दिक्कत आती हो। हमारे देश में ही है ये केवल। आप कोई और बता सकते हैं देश? I would not see that as a major impediment, as a major obstruction. I think the because ideas can take any form and any language, and if there is the generation of an idea in a particular language, which, as you say, is not Matrabhasha, that does not diminish the idea नहीं, that. डिमिनिश की बात नहीं है। अगर जिन भाषाओं में हमारी ज्ञान परंपराएं हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर की हो, चाहे वो वीविंग की हो, जो भी शास्त्र हैं हमारे, और आप जानते हैं हर एक ऑक्यूपेशन के, हर एक टेक्नोलॉजी के अपने शास्त्र हैं। वो तो जिन भाषाओं में अगर हम उनको पढ़ ही नहीं सकते तो उनको रिवाइव क्या करेंगे? Madhuji, I'll give you a very simple example. You हम्म, mentioned architecture. हम्म, Several years ago, a scholar named P.K. Acharya, हम्म, Prasanna Kumar Acharya, जी, wrote several volumes, 5 or 6, depending on which was the publisher, called Manasara, हम्म, in which he compiled very exhaustively the entire available corpus of architectural literature, including measurement systems. We do not use those measurement systems, even though people who have studied this in architectural school can recite those measurement systems, but we don't use it. We use a metric system still, even when constructing mandirs. हम्म। I think this is a far more serious problem than insisting that Matra Bhasha be used in order to convey ideas. When नहीं, the नहीं, मेरा ideas are conveyed in Matra Bhasha, they are not taken up. नहीं, And this मेरा is मतलब not for architecture, this is for every single subject in India and in Asia which has been colonized. नहीं, वो सब्जेक्ट किस भाषा में पढ़ेंगे अगर हमको वो जिन भाषा में ओरिजिनल ग्रंथ है, होता क्या है? होता क्या है? उदाहरण के लिए, जिसने भी मान लीजिए अ, रामायण या महाभारत या कोई भी हमारे शास्त्र पढ़ने हैं, तो संस्कृत की भी पढ़ाई जो करते हैं, वो भी जवाब जो है अंग्रेजी में लिखते हैं और ओरिजिनल सोर्सेज नहीं। अभी आप देखिए ये जो सारी एनोटेटेड एडिशंस हैं, विदेशी यूनिवर्सिटीज छाप रही हैं। हमारे सारा ऐतिहासिक जितना भी लिटरेचर है, वो विदेशी यूनिवर्सिटीज, विदेशी रिसर्च सेंटर्स छाप रहे हैं। और आप जानते हैं
कि उनकी इंटरप्रिटेशन में कितनी बेईमानियां घुस जाती हैं, क्योंकि वो हमारे इंटरप्रेटर्स बन गए हैं। अब मनुस्मृति को ही लीजिए, कितनी उसके बारे में विषमता फैलाई गई है, क्योंकि ओरिजिनल कोई पढ़ता ही नहीं है यहाँ पे। उसमें ओरिजिनल में कौन सी चीज जेन्युइन है, कौन सी उसमें बाद में घुसाई गई इंटरपोलेशन है। रामायण भी, महाभारत भी, हम जिन एडिशंस को पढ़ने के आदी हो गए हैं, अगर अंग्रेजी में पढ़ते हैं, उसमें एक आइडियोलॉजिकल बायस, एक शिफ्टिंग आ जाती है। ओरिजिनल सोर्सेज पे जब आप जाने की क्षमता खो बैठते हैं, तो कैसे होगा? हम उसके हकदार ही नहीं रहते फिर। Madhuji, I understand what you say. However, what I am trying to point out is that even where you have original sources, what use have they truly been put to? I'll give you हम्म। another example. See, some 3 years ago, about 3 years ago, uh, I concluded a series of conversations with the Center for Indian Knowledge Systems, which is based in Chennai. And they had done work on जी। Vriksh Ayurved, not in a concerted way. That means not as a program, but as and when they were able to follow it and find people to follow it. They were interested that whatever we have done as Vriksha Ayurved, we would like to compile it as a publication. जी। Um, and what we found is that people were not ready to support even that little bit, even though we knew that the texts of Vriksha Ayurved are available in the original Sanskrit, plus the commentaries, whether in Tamil or in Telugu or in Kannada or in Malayalam. uh, we did not know whether there is anything available which describes the application of Vriksha Ayurveda, not just the theory. हम्म। And so this was done thanks to the um, uh, a foundation which was able to advance the money. CIKS did in fact compile and publish this publication on Vriksha Ayurveda, which is perhaps one of the few available in India in the last 30 to 40 years. हम्म। That is, what is Vriksha Ayurveda? How, what use can it be put to? So, this is what I'm saying about even when you have an original source in an original granth in the Matra Bhasha or in our regional Bhashaon, what use is it being put to? So this is a science that has the which whose description was available, but people simply did not use it. So in this way, even though this publication is in English, people are understanding that this is existing, it has been put to use, and if they have further questions, then they can go back to the original Granth, the original Matrabhasha, or to any of our regional languages. ट्रू, आई फुली अग्री विद यू देयर दैट मैं अंग्रेजी को नकार नहीं रही थी। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि समस्या इससे भी शुरू होती है कि हमने 3 पीढ़ियां 1947 के बाद ऐसी पैदा की हैं जो मातृभाषा में, संस्कृत में, हिंदुस्तान की हर भाषा में इलिटरेट है। मैं सिर्फ उतना कहना चाह रही थी। तो वो इमोशनल रिश्ता भी उन ज्ञान परंपराओं से टूट जाता है। बस इतना ही मेरा पॉइंट था। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स जो चेन्नई बेस्ड है, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, उनको भारत सरकार से नहीं, फोर्ड फाउंडेशन से सपोर्ट मिलती रही है। Uh, I think both. I think both. You see, they were their main work was actually the preservation and propagation of indigenous rice varieties of parts of Tamil Nadu, यस, which they were, आई नो, आई which नो I'd देयर say they were, वर्क, and they've done very good work. I'm not saying
Yeah, belittling it. yeah. Yes. Hmm. So they did work with Department of Rural Development for some time, so far as I know, and also with the state government. But yes, I think the major program, what they call, what the international donors I think called programmatic funds, which I think were which will last for more than a year. I think that came from certainly a European organization which was doing the same with a similar outfit in Sri Lanka. जी It could have been Dutch, but I'm not sure. जी। तो ये भी अपने आप में बहुत दुख की बात है। और मैंने बात की थी CIKS के साथ, सेंटर फॉर इंडियन, दे आर गुड फ्रेंड्स, द पर्सन हु फाउंडेड इट हैज बीन एन ओल्ड फ्रेंड एंड आई डू रिस्पेक्ट हिज वर्क। उन्होंने मुझे बहुत सुंदर पूरी कनेक्ट कलेक्शन गिफ्ट भेजी थी दिवाली पे, अपने राइस वैरायटीज के। आई मीन सच अ ट्रीट टू इवन वॉच लुक एट इट, लीव अलोन Correct. ईट इट। Correct. बहुत सुंदर, Correct. बहुत ही स्वादिष्ट। परंतु उनका ये कहना था कि ये काम के लिए हमारी सरकारें उतना स्टेबल फंड देती ही नहीं है कि हम उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और शायद CIKS को तो 40 साल तो होने को, 35-40 साल About, से उन्होंने about. काम किया है। Yeah. पहले ये PPST में थे, पेट्रियोटिक पीपल साइंस टेक्नोलॉजी ग्रुप के हिस्सा हुआ करते थे, जो धर्मपाल जी ने की वजह से कैटलाइज हुआ था वो ग्रुप साइंटिस्ट का। तो इन्हीं इन्हीं सवालों को लेकर पीपल्स टेक्नोलॉजीज, परंतु बिखर गया वो ग्रुप क्योंकि कोई खास सपोर्ट नहीं मिली। और फिर जैसे ही CIKS एक तरफ चल गया, बाकी लोग अपने अपने दिशा में, कोई सरकार के साथ जुड़ के काम करने लगा, वो अलग ही दिशा बन गई। तो यही मैं कह रही हूँ कि नहीं मिलती, ये बहुत दुख की बात है। तो फिर कहाँ से, कैसे समाज कैसे इसका इंतजाम करेगा? Well, again coming, अभी ये what we call in the Konkan region, tandul or rice, dhan, धन के विषय पर, whatever I have seen, because I have done some considerable work on documentation of traditional crop cultivation knowledge in agricultural systems, हम्म that wherever old seeds are available, these have been preserved by individuals or by families or by very small groups of farmers, हम्म without the intervention of any NGO, any organization, any funding body, and also without the intervention of the state. So completely without the intervention of Sarkar, simply because those who have kept the seeds have understood and have are fully conversant with the symbolic meaning of it, the cultural meaning of it, and do not accept that a hybrid seed can be used, for example, in the prasadam, nor can it be used in the naivedyam, हम्म nor can it be used nor can it be used as any offering, or even, for example, in the marriage ceremony where the stalks of rice are placed on the bride to be's head. So, हम्म keeping all this in mind, they have rejected the idea that a hybrid seed with so-called higher yield has the same cultural and symbolic value. And this is हम्म। what we look for, and this is what our Samaj must look for. बहुत सही कहा आपने कि उन रिचुअल्स में। अच्छा, अभी की जनरेशन तो छोड़ दें, इससे पहले वाली जो किसानों की भी जनरेशन थी, मैं देखती थी कि किसान हमेशा, जैसे देसी गेहूं वो उनके घर के लिए है, अंग्रेजी गेहूं यूज्ड टू बी फॉर द मार्केट।
एंड अंग्रेजी गेहूं इज वेयर दे डिड द पेस्टिसाइड, जो सरकार कहती थी ग्रीन रेवोल्यूशन के तरीके अपनाओ, पर अपने घर की गेहूं वो अलग ही रखते थे और अलग ही उगाते थे। अब वो भी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि 2 रुपए किलो अगर सरकार बेच रही है आपको या सब्सिडी दे रही है, किसान क्यों करेगा मेहनत? तो किसानों ने भी अंग्रेजी गेहूं खाना शुरू कर दिया है ये इंसेंटिव्स के चलते। व्हाट यू से टू दैट? वेल, यू आर कंप्लीटली राइट ओवर देयर. आपने बिल्कुल सही कहा. uh, लगभग 2009 से 2013 में एक सरकारी प्रोग्राम में एक सोशल सेक्टर कंसल्टेंट के रूप में शामिल थे. And there I was doing exactly the same kind of work that I'm doing even after that, which is documentation of traditional crop knowledge. Our program was based the management of the program was done at IIT Kanpur for some time, and then after that IIM Calcutta. But what we found during that program is, and which we made it known to ICR, Indian Council of Agricultural Research, which was running the whole show, that look, we can proceed with this program only on the understanding that every single Kisan household is a consumer of technology and also a consumer of inflation, of cost and price inflation, that it has actually nothing to do with, because that cost and price inflation comes from the city. It doesn't originate in the district. And only when we are able to offset this, when we are able to make the impacts of this less than what it is now, then we can go ahead with this kind of program. And why I'm saying that is because it's connected exactly with what you said earlier, that the kisan, the diversity of agricultural diversity has been deliberately narrowed down from the time of the green revolution, and in fact even earlier, to the point where two or three maximum crops are grown for commercial sustenance of the household. Whereas again, for the backyard and for the consumption of the farmer household, there is a wide variety. But this has been a concerted program of the what is called the Krishi Vigyan Kendras, that make it manageable, bring it down to the monocultural level, so that the widest spread of a crop in a growing area is more manageable. And this is the complete opposite of what we traditionally have grown up with. By traditionally, we have grown up with, I mean, in the generations before, let us say, the 20th century. So yes, farmer households are in fact kisan households. Kisan ghars are uh, in really a pincer, a trap. They must produce according to the dictates of the state, because they are consumers of pesticide, they're consumers of seed, they're consumers of technology, and they're exposed to inflation and costs which they have not contributed to at all. हम्म, बिल्कुल। अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ, सिंस यू बीन एट इट फॉर लॉन्ग, अब आप देखिए ट्रेडिशनल जो खेती होती थी और वो गाय के साथ जुड़ी होती थी। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर टुडे इज इम्पॉसिबल विदाउट देसी गाय, नॉट जर्सी गाय, क्योंकि देसी गाय का गोबर, देसी गाय का मूत्र, वो ही काम आता है ऑर्गेनिक में। एम आई राइट? नेचुरली, ओके। बिल्कुल सही. हाँ. अच्छा, एक तो वो स्पीशीज का बहुत बदहाली की, दूसरा
इतनी मेहनत से सरकारों ने लग के ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर जहरीले क्रॉप्स हमें, जहरीले पेस्टिसाइड्स, जहरीले इंसेक्टिसाइड्स और जहरीले जहरीले हर तरह से, पानी भी हम देख रहे हैं साफ नहीं है। और इसीलिए, और कुछ ना हो, ताजी सब्जी अगर आप कच्ची खा लो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो पक्का है, आपको लूज स्टमक हो जाएगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि पानी इतना गंदा है। अब सवाल ये है उसके बाद इलीट ने वापस, क्योंकि अमेरिका में, यूरोप में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक शुरू हो गया, तो यहाँ भी आ गया। और जो चीज हमारा किसान मुश्किल से 10 रुपए 15 रुपए किलो बेच पाता है, जो ऑर्गेनिक, क्योंकि जब से इलीट वर्ग ने शुरू की है, जहां से मान लीजिए मेरा ही दूध आता है, आज 170 रुपए किलो गाय का दूध दिल्ली में मिल रहा है। 170 रुपए किसान को, जब सीधा साधा किसान बेचता है, कोई उसको नहीं देगा। अंग्रेजी में बोलने वाले उसी किसान से लेबरर के रूप में काम करवा के 170 रुपए बेच सकते हैं। घिया, धनिया, तोरी, ये सब चीजें स्टैंडर्ड है। 150 160 रुपए किलो धनिया, 160 रुपए किलो। आप सोचिए, बाकी जगह आपको 10 20 रुपए का आराम से धनिया मिल जाता है, और यहाँ पे इतनी महंगे पे हमें लेना पड़ता है ऑर्गेनिक के नाम पे। तो लोग अब बड़ी खुशी से, तो इलीट वर्ग ने, जिसके पास पैसे है, वो ऑर्गेनिक के नाम पे, जो इलीट वर्ग खेती कर रहा है, करवा रहा है, उनको दे देंगे। परंतु किसान की जो उपज है, अगर वो प्याज, आप देखते हैं जब कभी एल नीनो की वजह से प्याज की खेती में अगर गिरावट आती है या कुछ भी, और प्राइस थोड़ा उछलता है, हाय तौबा मचा देते हैं लोग। हाय तौबा, ये नहीं सोचते कि इस किसान की खेती उजड़ी है इसलिए प्राइस ऊपर हुए हैं। तो चलो, जो बची खुची है उसको ज्यादा, अगर 2 3 महीने उसको पैसा मिल भी गया तो शांति से जी लो। प्याज के बगैर भी खाना बन सकता है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और बाकी जंक फूड पे खर्चा कर देंगे खूब सारा, पर किसान के हाथ में ना जाए इसके पूरे इंतजाम करते हैं। ये सुधरेगी कैसे बात? क्या इलीट ही खाएंगे अब साफ सुथरा खाना? उनके मुंह से छीन के हमने उनको जहरीला खाना सारा पीडीएस के माध्यम से दे रहे हैं। उनके बच्चों को खेती करना भुलवा दिया। किसान के बच्चे आज नहीं करना चाहते खेती, इतनी गरीबी है। अब इलीट वर्ग ऑर्गेनिक फार्म्स और क्या क्या उसमें ड्रामे हो रहे हैं। कम हग माय काउ एट, जैसे अमेरिका में है ना, वो यहाँ पे भी शुरू हो गया है। नोएडा में आते हैं मुझे इनविटेशन, काउ हगिंग के लिए इतने पैसे, और ट्रैक्टर ट्रॉली की राइड पे इतने पैसे, छाछ के साथ पकौड़े खिलाएंगे तो 500 रुपए। मतलब आप बताइए, जिसका काम था खेती उसको उजाड़ के ये नौटंकी वाली ऑर्गेनिक खेती चलेगी तो इससे क्या अर्थव्यवस्था चल सकती है? आवाज नहीं आ रही सर, माइक अच्छा, प्लीज। हाँ। what have I done? Huh. You've raised several different points here. I think I'll try and take them one by one. The first one is, as you said, about organic and by implication non-organic. So yes, organic. We have imported the idea of organic being fashionable, and because it is fashionable, it is therefore more expensive. Sometimes very much more expensive. And the result is that we have now a hierarchy, a kind of caste system of food, where you have expensive, organic, good quality, apparently pesticide free food, raw food, and you have the other kind of food, which is
I would call chalu food, which is low quality crops grown in conditions that are heavily pesticidal, uh, whose irrigated water has probably got some contaminants in it, effluents in it perhaps. And this is either used for direct consumption, or, which is more probably the case, goes into the processed and snack food market, uh, which is a very large market and is growing much faster than the direct raw consumption. So yes, we have this hierarchy of food now in India as well. Whereas 2 generations ago, nobody knew what organic meant. It had no meaning as a term because everything was organic if we understand the term the way that we use it. Uh, so I would say that what you have pointed out is in fact one of the central one of the central issues which I wanted to discuss with you on this episode of your show, which is how India, whether pre independence India, but particularly post independence India, has taken to adopting the terminologies of the West without giving enough thought to the processes and the machinery that also comes with using these terminologies. So, as you were saying earlier, this importance of Matra Bhasha, had we not done this and been so eager to say we are fashionable and we are progressive because we prefer organic food, and we are a society which is advanced because we have more organic food, then we would be, I think, in a much more dharmic state, in a much more dharmic condition, because we associate a particular kind of cultivation with our religious and spiritual values. Hmm. When by adopting that terminology, we have also caused the extinction of those values. So बिल्कुल सही. as you said, the desi gau, from all indications, Dharampal ji has also mentioned it and written about it. Uh, right from, in fact, right from the time of uh, the large scale supply of meat to British army canteens during the occupation period, the question of what kind of cow either gives better meat for those kind of consumers, or better milk and more milk for all kinds of consumers, has overtaken the idea of Gau itself. So Gau as a product has overtaken the idea of Gau Mata, which is central to our very cosmology. When we say that, I mean, for example, in the Konkan region, where I am in Goa, in the Konkan region, in these 2 districts, in the 2 districts north and 2 districts south, until even 3 to 4 years ago, and this is very recent, in small rice farms, we only went Nanga Pair, Hmm. bare. We were not allowed to step into that field wearing chappals, shoes, sandals, kuch nahi. Hmm. Why? Because of reverence to Bhu Mata. So, these are the kind of values that are still to be found, I would say, in isolated pockets of India, where this adoption, this rush to adopt Western terminology, machinery, and methods has still not penetrated, or has still been kept at a distance.
पर हमारी सरकारें इतनी डेस्परेट हैं इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की, जो आज भी धरती को माता समझते हैं, धरती माँ समझ के पूजने होते हैं। वो बॉलीवुड की फिल्मों में अच्छा लगता है बस, कि गांव की मिट्टी लगाई और वो ये नौटंकी। बट जो आपने कहा कि पाँव नहीं लगा सकते जहाँ नहीं। आपकी फसल है, बिकॉज इट्स सेक्रेड। और हर किसान अपनी फसल का पहला हिस्सा मंदिर में चढ़ाना हाँ, वो, हाँ। या पंजाब में भी है कि फसल का पहला हिस्सा गुरुद्वारे में जाएगा। पर अब आप सोचिए, जो प्रसाद में इस्तेमाल होना है, पंजाब का किसान भूल गया कि गुरुद्वारे में लंगर बनना है उससे, और वो जहरीली दे रहा है लंगर के लिए भी, यानी प्रसाद के लिए भी। जो गेहूं दी जा रही है गुरुद्वारे को वो जहरीली है, पर ये भूल गया। अपने खाने के लिए भी वही जहरीली, प्रसाद के लिए भी। पर कम से कम कुछ जगह ये ट्रेडिशन बची हुई है कि कुछ रिचुअल्स में आप नहीं ये अंग्रेजी चावल या these pesticide grown rice or wheat or any of it you will not use. But by and large it's gone, nobody cares now. क्या आप ऑफर कर रहे हैं अपने इष्ट को भी? Madhuji, I'll give you one story. Perhaps it will be of some use to somebody somewhere. Some years ago, I was working with a small group in Kerala, in the this district of Pathanamthitta, which is falls in the central Travancore region. It's more or less midway between Kochi and Tiruvananthapuram, and there, in a village which is on the river Pampa. Pampa originates at the on the Shabrimala hill, in fact, Hmm. um, and then the water course goes all the way uh, across the state and into the sea. Um, so there is a very old mandir, the Parthasarthi mandir, and in this mandir, one of the rituals is the offering of the rice, the freshly cut rice stalks, complete with the panicles. Now, those stalks can only be of the rice that is grown in the neighboring wetland. Hmm. And what had happened is, because of a so called development project that was planned by the state government in that wetland, which Hmm. included which included an airport. They wanted to put an airport there, Hawaii Hmm. Adda. If that Hawaii Adda had come there, then not only the river but the wetland would have been destroyed. The temple itself, the Agraharam lands of the temple, would have been encroached. Fortunately, there was a strong movement against it. It was led by a man who was of tremendous integrity, and this was a stop was put to this. But while that happened, rice was not cultivated there, and what they were forced to do for this particular to complete this particular ritual was to bring rice from Tamil Nadu. Oh. Huh. And having spent some time with them and understood what the especially the ritual part of it, the crafts, etc., I began to see that, look, perhaps I can make an intervention here. So my suggestion to them was that, look, this is all very good. You will have saved the wetland, but there is one more thing remaining to be done, which is that if Shri Parthasarthi is to be truly happy with what you are offering him, then you must grow it here. And fortunately, this was agreed to, and they did begin to grow it there. So, what I'm saying is that this kind of connection between the sacredness of water, the pavitrata of our jal, the punyata of our bhumi,
and the offering that we make to any of our devas, all this has to come together. And Hmm. it is not Sarkar that can do it, it is only Samaj who can do it. Jage हुए Samaj can do it. वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। अच्छा, एक और बात इसी में जुड़ जाती है, आप क्योंकि इंटैंजिबल हेरिटेज की बात कर रहे हैं, टैंजिबल से भी आपका अवश्य रहा होगा रिश्ता, अगर आपने यूनेस्को का काम किया है तो। जो हमारी स्थापत्य कला थी या ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था, उसका ज्ञान हम समाज कैसे बनाए रखे, क्योंकि आप मेरे से शायद बेहतर ही जानते होंगे कि अंग्रेजी शासन के दौरान ही ये कानून लाया गया कि जो सरकार अप्रूव्ड घर, मतलब कॉलोनी होगी, उसमें जो घर बनेंगे वो सरकार अप्रूव्ड आर्किटेक्ट्स द्वारा, जो कि विदेशी आर्किटेक्चर पढ़ेंगे वो डिग्री लेके। तो वही आज भी चल रहा है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल स्थपति हैं, उनको तो अधिकार ही नहीं है मंदिर के अलावा कोई घर बनाने का। आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर सरकारी सर्टिफाइड आर्किटेक्ट ने, चाहे वो गधे का बच्चा हो, चाहे उसको कख ना आता हो, जिसने कट पेस्ट ही किया हो विदेशी मैगजीन से कुछ पिक्चर्स लेके कट करके, कट पेस्ट करके वो जो बनाते हैं आजकल के घर, उसको मिल जाएगा। कोई नहीं परवाह करता कि वो जो बना रहा है वेदर इट्स लिवेबल इवन। परंतु जो हमारे स्थपति हैं, चाहे उन्होंने अजूबे बनाए हों उनके पूर्वजों ने और वो ज्ञान उनमें हो भी, पर मैं उनसे घर नहीं बनवा सकती हूँ, तो है के भी मुझे बनाना ही पड़ेगा। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के हाफ ऑफ देम आर सो मेल एजुकेटेड and they are making monstrosities. So how can Samaj do it if this Sarkar doesn't allow you to get your house built by people who know better? और वो जनरेशन भी खत्म हो चुकी है। अब उनके बच्चे तो लेबरर बन गए। जो ट्रेडिशनल स्थपति थे वो तो ईंटा गारा ढो रहे हैं या अबैंडन कर दिया। मंदिरों ने रखा है सिर्फ स्थपतियों को जिंदा, बाकी तो उनकी कोई जगह छोड़ी नहीं, तो उसका कैसे करेंगे? Yes, Madhuji, I think this is something that really gets to the heart of why our towns and cities are so ugly. They're so, the very opposite of Sundarta. That is what they are. We have lost, I would say, or maybe we're no, I would like to be optimistic and say we still have it, but we are on the verge of losing our civilizational sense of aesthetics in all our spaces, especially our domestic spaces. Our domestic spaces have become so very ugly by the adoption of modern materials. uh, the false ceilings, the wallpapers, the plastic accessories, the shininess, the artificial shininess, and the adoption of lighting. This harsh white light, completely at odds with the luminosity and radiance of what we get from the diya, uh, which is much more natural to our eyes than all that. So we have lost the aesthetics, but these were not only aesthetics; they had the qualities of material science behind them. We don't have flowing curves anymore in our public buildings. We have blunt edges, what in the Soviet and communist era they called brutalist architecture. it हम्म। was it was meant to overpower you psychologically, uh, with the might of the state, बट and this तुम्हारा is तो what वो भी has. नहीं करता। यू थिंक डीडीए फ्लैट्स ओवर पावर यू, दे रिवोल्ट यू?
No, but Look look at like the slums psychology. even before. No, no, I agree. But Madhuji, I mean, I grew up in Bombay, and the chawl system was invented there in the first decade of the 1900s, when the huge migration to urban areas is the three presidency capitals, Bombay, Calcutta, and Madras. When that happened, that's when chawl started being built and invented. In fact, Singapore's entire housing development board (HDB) system was based entirely on what the British had done in Bombay as the chawl system, but upgraded in a certain sense, made less unlivable, to put it that way. So yes, this has been going on for some time, but the chawl as the replacement of the village environment was a was a hideous distortion, because it completely removed the essence of aesthetics. It removed the space that one needed. It fragmented the joint family. So it did a number of things, and these were all psychological. And that's what I meant by this adoption of a brutalist system. We don't Hmm. call it that, but it did exactly the same thing. Hmm. True. True. और ये एक हमारे व्यूअर हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही है. आई वांट टू ब्रिंग इट योर नोटिस. My hometown is near a dense forest with elephants in it. The elephants never eat GMO bananas. They used to earlier raid banana fields. अब आप देखिए, एलिफेंट को समझ आ गया ये खाने लायक नहीं है. जेनेटिकली मॉडिफाइड बनानास एलिफेंट नहीं खाते, वो ये कह रहे हैं. और मे बी द फार्मर्स आर हैप्पी. पहले तो वो रेड करते थे. वेल, मुझे तो पता ही नहीं था कि जीएमओ केले भी अभी उगते हैं भारत में. आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड बाय दिस. सही बोला होगा इन्होंने, क्योंकि अपने घर की बात कर रहे हैं और हाँ, आंखों देखी बात कर रहे हैं. और एक और है, प्लीज डोंट प्रमोट होम स्कूल. इंस्टेड गवर्नमेंट शुड मेक धार्मिक एजुकेशन कंपल्सरी एंड फ्री इन ऑल स्कूल्स. थिंक बिग, हाउ मेनी विल यू टीच बाय होम स्कूल. आरपी कह रहे हैं क्योंकि परसों हमारा एक होम एजुकेशन पे प्रोग्राम हुआ था. हाँ, तो विजया थी उसमें आई, विश्वनाथन, विजया विश्वनाथन, जो राजीव के साथ किताब लिखी है ना, स्नेक्स इन द गंगा. She described how she withdrew her children from school in America, then shifted to India to do homeschooling and Sanskrit-based education. But now they are in Ivy League universities in the West, because यहाँ तो उनको कोई एडमिशन नहीं दे रहा था, वहाँ फटाफट पहुंच गए. तो इनको चिंता हो रही है. देखिए, आरपी मैं कौन होती हूँ प्रमोट करने वाली, पर जो मौजूदा शिक्षा है बहुत घटिया है. आप बिल्कुल सही हैं कि सरकार को भी अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, उसके लिए प्रेशर बनाना ही पड़ेगा. पर एक ऑप्शन के रूप में बहुत आवश्यक है कि गुरुकुल भी हो, होम स्कूलिंग की आज़ादी भी हो. वन साइज फिट्स ऑल, डाइवर्सिटी खत्म कर दो. वही सिलेबस सारी देश में पढ़ाया जा रहा है. गधा भी वही पढ़ रहा है, घोड़ा भी वही पढ़ रहा है, और बंदर भी वही पढ़ रहा है. ऐसी शिक्षा नहीं चलती है. और शिक्षा वो होती है जो जिसकी जो ज़रूरत है उसको पढ़ाया जाए, जो जिसकी क्षमता है उसके अनुसार उसको पढ़ाया जाए. और वही रट्टा, स्टैंडर्ड रट्टा किताबें जो दे रहे हैं. आप क्या कहेंगे राहुल जी इसके बारे में? मैंने तो जो कहना था कह दिया. well, Madhuji, I would have to say that I am certainly in favor of the social impulse that leads people to think about homeschooling, because parenting comes from parents at home, and especially if grandparents and a larger array of elders are available, which used to be normal in all our households, then your education comes from them, your primary education comes from them. But from my perspective, which is considered to be the cultural perspective, although I think it is considerably more than that,
all your values and your symbols and the meanings attached to them come only through this kind of education. It cannot be given to you in an institutional setting, which we call a school, a primary or tertiary school, or a college or a university. They are able to perhaps interpret what values are, but more dangerous than that, they instill into you value systems that have nothing whatsoever to do with your social environment, or your family, or your culture, your cultural mores and norms, nothing whatsoever. And this is the reason why we have, unfortunately, now larger and larger numbers of youth spouting ad nauseum the theories and the texts and the scripts that come from the UN system, from the United Nations system, about the homogenization of the world, the the various kinds of whether there are three or 53 genders, the great big um, push for so-called inclusivity and diversity, which is in fact entirely the opposite. And this, I would say, all this is happening because the role of parenting, essential role of parenting, which is not just the two parents, the mother and father, but the elders as well, that has been replaced deliberately in a very very long running, very well thought out campaign to take over the minds of the youth and to convince the natural parents, the natural givers of our symbols and our cultural meanings, to convince them that what they have, in fact, is not worth it, that they must yield to an international system which is better equipped. I think this is the danger, and that is why parents who want to defend their children from this kind of attack, from this kind of proselytization, this is also conversion in another way. No, Parents who want, actually it's worse than conversion because you don't even know आपके because बैंड you don't दिमाग का even क्या know. बैंड हो गया। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज की जो जनरेशन है वो पेरेंटिंग के काबिल रही भी है कि नहीं, ये भी आपको देखना है। ये एको क्यों हो रही है आपके यहाँ से? आपने कुछ ऐसा ऑन किया हुआ है जो एको कर रहा है बार बार? नहीं। ऑलराइट, दो बातें। एक तो है जो गरीब परिवार के गांव से उजड़े हुए आए हैं, खेती छोड़ दी, वीविंग छोड़ दी, यहाँ स्लम्स में रह रहे हैं और रिक्शा चला रहा है, कोई पान बीड़ी बेच रहा है या ईंट ईंटा गारा ढो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है। वो सारी जो जनरेशन है जिसकी ना तो ढंग से कोई तथाकथित मॉडर्न स्कूलिंग मिली है, पुराना ज्ञान उनका भी छूट चुका है ये 2-3 पीढ़ियों से, तो उनको तो सही में अभी मैं अपने आसपास ही देखती हूँ जितनी भी गरीब महिलाएं हमारे यहाँ पे आसपास काम करती हैं झाड़ू पोछे का किसी और के घर में, उनसे मैं बात करती हूँ तो उनकी जो डिपेंडेंस है लोकल केमिस्ट पर, कोई बीमार होता है बच्चा, उनको नहीं मालूम जो मेरी माँ को 70-80% बीमारियां तो किचन के नुस्खों से ही ठीक करती थी, उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। इनको मालूम ही नहीं है, खत्म हो चुकी है वो ज्ञान परंपरा। पेरेंटिंग क्या करेंगी? और गरीब भी हैं तो उनको इश्तेहार टीवी पे देख देख के बेबी फूड क्या खाना है, बच्चों को चिप्स खिला रही हैं, पेप्सी पिला रही हैं, खुद भी पी रही हैं, खिला, कोई उनको बताने वाला भी नहीं है। एक तो वो क्या पेरेंटिंग होगी? सबसे बड़ी बात है, बहुत सी माताएं या तो गरीब परिवार की हैं तो दूसरों के घरों में काम कर रही हैं या कहीं और सब्जी बेचने जाती हैं, उनके पास टाइम भी नहीं है। फिर अगर है भी टाइम तो सारा दिन काम करके टीवी के सामने बैठ जाती हैं।
वो सास बहू सीरियल देख रही हैं। अब उससे क्या पेरेंटिंग करेंगी? क्या पेरेंटिंग होगी? पुरुषों का भी यही हाल है, जो खेती छोड़ के इसलिए आए कि खेती तो गरीबी का घर है। वो उनके बच्चे, जिन माँ-बाप ने अपने बच्चों को कहा भैया निकलो गाँव से, यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारा फ्यूचर, वो खेती के बारे में इतना भी नहीं जानते। मेरे ही दफ्तर में ऐसे लोग हैं जिनके माँ-बाप आज भी गाँव में हैं, माँ-बाप ने भी खेती छोड़ दी, बूढ़े हो गए, और उनको आलू का और मूली का पौधे में क्या फ़र्क है वो भी नहीं पता है। ये किसान के बच्चे हैं, फर्स्ट जनरेशन निकले हैं घर से, फिर भी उतना भी नहीं पता है। नाम भी नहीं पता कि ये आंवले का पेड़ है या ये अर्जुन का पेड़ है जो उनके आसपास कहीं कॉलोनी में लगा हो, नहीं पता है। अब ये बताओ ये क्या ज्ञान देंगे? वो सारा ज्ञान ये यहाँ से ला रहे हैं अपने लिए भी, सारा दिन फेसबुक। माँ-पिता भी तो वही कर रहे हैं। ये पेरेंटिंग वाली जो बात है, बहुत एलीट परिवार में कुछ जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ गए, अमेरिका भी पहुँच गए, फिर लगा कि ये तो कुछ अच्छी शिक्षा नहीं है, चलो संस्कृत पढ़ते हैं और बच्चों को वो पढ़ाते हैं। अब उन्होंने सारी दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स देख लिए और फिर वापस आ रहे हैं। वो पेरेंटिंग अलग किस्म की होगी। पर अधिकतर पेरेंट्स, आपकी माँ यदि मिरांडा हाउस की, जेएनयू की पढ़ी हुई है, वो क्या बताएगी आपको? वोकिज़्म ही सिखाएगी ना बच्चों को। उसने जो सीखा है, उसको जो सिखाया है, अशोका यूनिवर्सिटी से निकली जो महिला होगी, उसने टेढ़ी-मेढ़ी फेमिनिस्ट सारी थ्योरी पढ़ ली, वो क्या करने वाली है पेरेंटिंग? क्योंकि ये भी बता दिया गया है पेरेंटिंग इट्स ऑप्रेसिव, women being confined to motherhood role is oppressive, demeaning. क्या पेरेंटिंग बचेगी? Sorry. Well, Madhuji, well, this you have in fact described the, I think the psychological role of technology, which is one of the issues that I had wanted to bring up with you uh, during this discussion. That with the question relating to technology being, what are the means, when we ask the question कि ज्ञान परंपरा की रक्षा कौन करेगा, समाज करेगा या सरकार, then we have to see what are the tools available to samaj and what are the tools available to sarkar. And what we have seen, sarkar will always adopt technology and its related processes. Samaj will operate at the level of the gram or the household and not more than that. Sarkar, because of the way the administration thinks, will always think in terms of 50 districts, half a state, one full state, a huge number of people, and will look for the tools to broadcast, to carpet bomb, blanket. These are the only tools Sarkar knows. And especially since the invention of the mobile phone, Sarkar has found a vehicle to do this with great ease. So, I wanted to point out something that, especially concerning this, what you held up as mobile phone as the medium to create dependency on a alien system of thought. The Jewish civilization, uh, about 40 years ago, when the early generation of mobile phones came, this is actually what it somewhat looks like, but this is a new one. There are older Hmm. ones, Hmm. very simple ones with a small screen which tells you the number and buttons to press. That's all it was. नोकिया का होता था छोटा सा, Correct, 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 correct. बिल्कुल बेसिक एंड वेरी Very एफिशिएंट। basic.
It was meant to for you to make a phone call and receive text messages, SMS. Hmm. But when that was was to be introduced, was sought to be introduced in Israel, they put it to a test in the same sense that is given to food items primarily, which in the Hebrew nation they called kosher. So these are subjected to a variety of interpretations as to what they are made of, how they are produced, what the effects of their use will be on uh, all the different kinds of people in society, and therefore whether it is permissible or not. And if it is permissible, when it permissible, under what circumstances? All circumstances are only a few. And so they in fact subjected the mobile phone when it first came out to exactly the same thing, saying that what is this going to do to us? Hmm. And of course, the understanding that I have of what happened is that they did not want it and did not like it, but that the telecom multinational lobby around the world finally prevailed and got it through. So you know what I wanted to point out here is that right from the time of, let us say, 1870s, 1880s, and 90s, when the great expansion of railway and telegraph was being undertaken in what was then British India. From that time until today, no major technological um, import that we have had has been subjected to anything like this sort of inquiry which I've just described. What will Hmm. it do to us? See, in our parampara, and in fact in any of our Shat Darshane, our six systems of philosophy, Hmm. we have extensive inquiries and conclusions about the nature, the material nature of what we call Punya Bhumi Bharat, Hmm. where we say we like to refer to and cite Upanishadic shlokas saying that vibration, frequency, mantra, this is the essence, motion is the essence, the entire cosmological system is because of the invocation, vach, all that. And yet we did not give a thought to these horrifically destructive systems that were brought in, the laying of railway lines. What did that do to the natural frequency of Bhumata? What did the laying of telegraph poles and telegraph lines do to the natural frequencies and vibrations of our Akasha as a living element? Hmm. When we built dams, great big dams across rivers, what did that do to the natural motion of rivers, which are the essence of our understanding of jal as a living element, which takes on the feminine principle because of the fertility that is embedded into the very idea of every boond of pani. So Hmm. we did not subject these horrifically destructive technological interventions brought in by the colonial state and then brought in by our own state to this Hmm. kind of inquiry that I just described, which was done by the Hebrew nation. अच्छा, मुझे ना इससे भी आपने जो बहुत सही कहा कि डैम बनाने से, अभी जोशीमठ का हाल जो हो रहा है वो टनल्स और डैम्स का ही है। अंजाम, मुझे तो ये मेट्रो से भी बड़ा डर लगता है, क्योंकि वाटर चैनल्स जो हैं, अगर आप सारे शहर में वो टनल्स मेट्रो की बिछा रहे हैं, तो वो वाटर चैनल्स का क्या होगा?
Has anybody actually done proper studies to figure out whether you're disturbing that flow? Do they do that, Rahulji? They do. They do that. They do that from, so far as I know. But from the point of view that we are building these metros, how do we protect the metros? So the point of Huh, view but is not Mother Earth and the water flow in not at underground. all, not at all, not at all, वो असली and है इशू. not at all. असली मेट्रो इशू नहीं है, असली इशू वो है. फिर Yes, जब yes. फ्लड्स आते हैं तो फिर रोते हैं. तो फ्लड्स नहीं आएंगी तो क्या होगा? So you see, this again is the mechanistic, the mechanistic uh, West European industrial revolution mind at work. That we have the technology, we have the means, we will shape nature to fit our purpose. And this is the reason why I feel very strongly that so many of our cities have experienced deadly floods over the last 15 years or so, because we are interfering at a subterranean level with the natural correspondence of one kind of water with another kind of water, which our ancients always understood very well. बिल्कुल. Our ancients very understood very well, and that is why even in the state that I live in, Goa, we have extraordinary, awe-inspiring examples of water management going back to the later Vedic age, Hmm. where every single riverbank is shaped by hand, but which allows the natural flow of water during monsoon and then after monsoon to move between the salinity of the sea to the freshness of what comes down from the ghats, in a Wow. way in a way that naturally enhances the life, whether in the river or whether in the wetland, in the way that naturally produces three crops of rice. And this was a technological system that was also used in Sri Lanka during the reign of the kings at Anuradhapura. It was also used in the Angkorian civilization in what we today call Cambodia, because of this fundamental understanding of water. Uh, so yes, you are you are quite right to feel disturbed by what the metro represents. But the Indonesian capital of Jakarta several years ago. In fact, when I last visited there on a UNESCO training, they were already saying, "Look, Jakarta is a doomed city because it is sinking," and of course, it is right on the coast. And the question is, why is it sinking? Oh, the sea level is rising, and we will be flooded by the sea. But in fact, it was not so. The city was sinking because they had dug too deep. They had extracted the groundwater, and when you extract the groundwater, the Ah, space below a structure, even if it sits on water, that water is as stable as a brick or as a rock. If you extract that, then of course water reservoir has to settle, and this is the reason why Indonesia has had the Jakarta has had this catastrophic sinking of parts of the city, which has led the country to look for an alternative capital. I mean, so we have these examples of the disrespect of nature from so many parts of the world. Uh, and in fact, ironically, Indonesia is what we would in ancient times would call Suvarna Dvipa, yeah. which adopted our thinking, our understanding of the elements, and our treatment of the living elements in exactly the same way. So if they have gone off the rails, then we should be learning from them at least what हमारे not to do. बम्बई का भी तो यही हाल होगा. Sorry, Bombay. हाँ हाँ, बॉम्बे का भी यही हाल होगा.
Bombay is a lost city. They are building 60-story towers over there on what used to be marshland. I mean, it's I know, a madness of the worst kind. And it's flooded. It's small rainfall, and the city is completely yeah. immobilized because it's flooded. They don't even know how to handle their drain water or rain water. कुछ भी नहीं उनको समझ आया. हर साल डूबता है शहर बारिश के दौरान, और फिर हर साल कोई ना कोई कमेटी बैठ जाती है. तो एनीवे ये तो चलेगा. मेरा लास्ट कमेंट है, so much to hear from you. Many of your stories are fascinating, but you know, going to come up with something that may shock you. But somehow ये जो बार बार होती है ना, ये global warming thanks to human madness and our tampering with nature, fouling up rivers, fouling up mountains, deforestation, ये सब. और फिर कहते हैं कि बस ए, कुछ एक सैकड़ों साल बचे हैं and there's going to be pralay. It delights my heart to think that the human species may actually be wiped out. I'm ready to go. क्योंकि we're not worthy of this planet. कितनी नियामतें बख्शी और हम बन क्या गए इतने डिस्ट्रक्टिव. माँ बाप भी अगर उनके बच्चे, मान लीजिए किसी माँ बाप के बच्चे रेपिस्ट निकलते हैं, मर्डरर निकलते हैं, डकैतियां करते हैं, माँ बाप भी घर से निकाल देते हैं. वी डिजोन यू. ये पृथ्वी हमको डिजोन करेगी ही करेगी. और मुझे लगता है जो कलयुग का अंत कहते हैं ना, तो उसके बाद एक फिर नया साइकिल शुरू होगा. आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट. पीपल फील अफ्रेड, कुछ करें हम जग जाएं. इफ वी डोंट, यू नो, एवरी सेकंड डे आई सी अ टीवी प्रोग्राम. इफ वी डोंट वेक अप ग्लोबल वार्मिंग विल डिस्ट्रॉय द प्लैनेट, ये वो. तो अच्छा है ना, इस लायक हो ही नहीं तो हम सब मिलके. मुझे तो कोई डर भी नहीं लगता, दुख भी नहीं होता. मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा होगा. ये ह्यूमन स्पीशीज डिजर्व्स टू बी actually made extinct and a new cycle begin, because I'm told scientists say it, uh, that 50 साल अगर ह्यूमन स्पीशीज निकल जाए. यू सी, वी सीन फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाइज एक्सटिंक्ट होती हैं तो कितने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं. अगर एक्स स्पीशीज जाती है तो कितने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. बट साइंटिस्ट से that if human species disappears, then in 50 years Mother Earth will rejuvenate. What a wonderful prospect. We should be ready to quit. What do you say to that? Other hand, on on the other hand, I have come across views which say that talking about civilizations that have vanished, civilizations that were once very powerful, very rich, and which we don't have a trace of, that it wasn't greed that killed them, it wasn't ambition that killed them, it wasn't even the overuse of resources that killed them. It was stupidity that killed them. uh, and therefore they disappeared to be replaced again by some group which was able to balance nature in a more reasonable way. No, Gino. Hindus disappeared from large parts of the earth thanks to barbaric hordes that came as invaders. I don't buy that. ये survival of the fittest नहीं, survival of the brutalist, the most barbaric, is the story of mankind, at least in the last 2000 years. So मुझे लगता है कि हमारे बस का तो है नहीं इन आक्रांताओं को, इन इन barbaric genocidal cults को हरा पाना. So let nature takes its own toll. And as I said, I'm quite happy if if the human species is wiped out and a new cycle begins. Sooner the better, I would say. I'd love to see it in my lifetime. You know, we've really made a mess of this.
We certainly have, Madhuji, but um, even in news cycle, uh, and this is something that we have evidence for because we have so much literature in our mool granthas about cycles, about yogas. So, therefore, I feel that we may certainly welcome a new cycle, but let us at least leave the documentation of what we have now for those to come after us so that Yes. they don't have to start from scratch. Well, our Rishi started from a scratch and did very well. Who knows? But it's a good idea. I think it's a good idea. हमारी डॉक्यूमेंटेशन बचती है नहीं बचती है बट कोशिश तो करनी चाहिए. और ये जो आप वाइब्रेशन की बड़ी सुंदर आपने बात कही, we'll end with that. You talked about the earth's vibrations, the cosmic vibrations. Now we have vibrations coming from TV screens, from mobile phones, from this that, I mean, 5G, 6G. Imagine what it's doing to our physical health, leave alone cosmic health. Just even in terms of very practical, people are getting cancers, brain tumors, what have you. I had a brain tumor. I was told it's because in the house that I used to live in, they were big. Over that building, there were big towers, telephone towers, a huge collection of them. I don't know whether it was because of that, but my doctor certainly thought it had a relationship, living right under them. But what do we do? We are so happy. 5G, 6G, never mind whether we survive and have our children who are brain damaged from birth. So, your concluding comments, Rahulji. Well, I thank you, Madhuji, for giving me the opportunity to talk about these subjects. I must say that the space available in which to talk about subjects like this is few and far between, I have to say. So I'm very grateful to you. Uh, I would like to repeat that every single thing that we call a modern convenience, which these days tends to be electronic, uh, comes at a great price. And the great price you have just mentioned. And the question is, why are we having to pay this price when, in fact, as Samaj, we should be subjecting each of these things to a searching and thorough inquiry based on our matchless heritage of understanding the material and the elements of the universe in the tangible form and their superconscious form as well. True. We, we have supersensibility in each of us, but we are allowing us ourselves to be distracted by these little toys and trinkets that come to us from the so-called technologically advanced civilizations. True, very true. And I fear for the children that are coming in this the new generation of kids, their food habits, their reading habits, what they're consuming, the lifestyle, the stress from such an early on. The entire education system is like a torture, an experiment in torture. That's what it's all about. And I do hope that whatever time there is left for human beings on earth, um, they wake up to better sense. With these, we'll wind up tonight. And please, anytime you wish to share thoughts, you said there's dearth of platforms. We are there for you anytime. And if you have any additional new ideas and stories to share with us, please let me know. You're very welcome anytime. इन्हीं शब्दों के साथ व्यूअर्स आप सबसे इजाजत लेते हैं. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वगैरह वगैरह. उतना तो आपका बनता ही है. बस और केवल जो न्यूज़ वायरल हो रही है उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय जो ह्यूमन सर्वाइवल के इश्यूज हैं और डिग्निटी के इश्यूज हैं, हमारे
हेल्थ के, मानसिक स्वास्थ्य के, शारीरिक स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं उनसे दूर मत जाइए। वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि अभी लेटेस्ट क्या न्यूज़ आई है टीवी पे, उस पे बस चर्चा शुरू हो जाए, उस पे चिल्लाना शुरू कर दें, हाय तौबा शुरू कर दें। यूरी वेज़मेनोव वर्सेस राजीव मल्होत्रा ऑन सबवर्जन। बिल्कुल सही कह रहे हो। Rajiv is here. I had a, I was part of a panel discussion yesterday with him to discuss his book on Jatis, Varnas versus caste, and he will be on our show soon, viewers. So I look forward to bringing राजीव ऑन दिस प्रोग्राम शॉर्टली। इन्हीं शब्दों के साथ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंशियल विजडम। It matters a lot that we learn about your stories. And whatever you can pen down, we would love to publish it. Many of your little anecdotes you were sharing with us. It'd be really nice if you could also pen them down and we'd gladly publish them. All right. It's been a pleasure listening. Shubhratri, namaskar.